When you started, assumption is that you started with a thesis, and that thesis was around a certain problem statement, and that problem statement was of a certain customer. That means the customer persona in some way is pre-decided. And now my view is that pivoting is closely related to hitting or missing a PMF, product market fit. I think the problem is PMF, and the problem of PMF is not that there is some definition to PMF. I think when demand of your product is naturally available, when you are able to sell your product pitching exactly how a potential customer talks about your product, when the problem statement aligns perfectly, when as soon as you appear in front of your ideal customer, they immediately buy you. For me, that's PMF. What is not PMF? आप पहले प्रोडक्ट को डिफाइन करते हो, फिर आपको कोई पूछता है कि अच्छा तो फिर आप क्या करते हो एग्जैक्टली, फिर आप उसको बहुत सारे शब्दों में समझाते हो, फिर उसको बात समझ नहीं आती, फिर वो पूछता रहता है तो अच्छा आप उसके जैसे हो, आप बोलते हैं हाँ बट हम थोड़े से हटके हैं। नहीं, ये PMF नहीं है, ये एंटी PMF है। फिर वो बोलता है कि अच्छा तो आप उसके जैसे हो, आप समझ लो कि इसका और इसका मिक्सचर बेड़ा गर्क। अगर आप किसी का मिक्सचर है तो नहीं होने वाला है। एंड थर्ड विच इज वर्स्ट, आपने डिफाइन किया कि मेरा आइडियल कस्टमर X है, आप उसके सामने जाके खड़े हुए, आपने बताया कि हम ये करते हैं, और उसने बोला हाँ ठीक है देखेंगे। इट्स अ प्रॉब्लम। दैट मीन्स PMF नहीं है। दैट मीन्स जिसको आपने आइडियल कस्टमर बोला वो आपको देखते ही लपक नहीं रहा है। दे आर नॉट पाउंसिंग यू एट द साइट। अब आप इमेजिन करो किसी की सर में दर्द है और उसके सामने आप सर दर्द की बाम लेके आते हो और आप बोलते हो कि ये स्पेसिफिकली इंडियन लोगों के सर दर्द में काम आती है, तो क्या करेगा वो? इमीडिएटली ले लेगा, राइट? अगर वो उस समय ना ले तो उसके 3 मतलब हो सकते हैं। पहला, उसको सिर दर्द नहीं है। दूसरा, वो इंडियन नहीं है। तीसरा, आप ठीक नहीं दिख रहे। You're not looking like a product that they should apply. Right? That means PMF नहीं है। My view is that, जब आप किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस को बना रहे हो, आपने शुरू ऑप्टिमिज्म से किया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। पर most of the times, especially in tech, it happens a lot more than physical products. Physical products में investment इतनी होती है कि people automatically become sane. But most of the times हम टेक्नोलॉजी पहले बना लेते हैं और फिर उसको प्रॉब्लम में फिट करने की कोशिश करते थे कि नहीं तेरा सिर दर्द है, मैं बता रहा हूँ तेरा सिर दर्द है, कंफर्म तेरा सिर दर्द है। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। एंड हो सकता है कभी कभी 2-4 लोग ले भी लेते हैं, फिर हमें फंडिंग मिल जाती है तो हम उसको बोलते हैं कि अगर तू ये बाम लगाएगा तो हम तेरे को 100 रुपये देंगे, तो सब लगाना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि वाह सेल हो रही है, सेल नहीं हो रही है क्योंकि it's actually not helping anyone. People were just using it because there was a discount or there was money. So we basically start building technology and then we start force fitting them into the problem. And because we have built something that works, we do force fit it somewhere. But because it's not a natural fit, it never hits that market fit. It always becomes that problem where you go, explain, convince, do 20 steps and then something happens. तब हम बोलते हैं कि अरे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत हाई है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, क्या करें? You cannot have product market fit and yet have a sales problem. Your product market fit's definition is that you don't have a sales problem. At best, you have a marketing problem. And a large part of that should also be covered by word of mouth. If people are not searching for you using the same words as you use to describe your own product, you haven't hit PMF. And if you are somebody who's building a product or a service, running a business, and you're thinking when to pivot, I think the right time to pivot is in pursuit of finding that PMF. There will be multiple points
where you will get an opportunity to either repurpose your product or repurpose your positioning or change the product altogether or maybe change the ideal customer. There is a startup, we are investors in. These people, they started they built a startup to deliver medicines 6-7 years back. Because of that, they started working with chemists because fulfillment. So they built a chemist management system. Couldn't sell. Chemist said, हमें नहीं चाहिए. Then they realized that, probably chemist तब खरीदेगा जब हम उसका पीछे carry and forward agent, CNF, उसके distributor को power कर देंगे. तो they built a CNF management system. उनके पास गए. उन्होंने बोला हाँ इंटरेस्टिंग है, बट अगेन नो मोमेंटम. वहाँ से कुछ करते करते एक दिन एक डॉक्टर मिल गई. डॉक्टर ने बोला क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम दे दो. उन्होंने बोला कि अच्छा एडजेसेंट है, चलो इसके लिए बना देते हैं. क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम में उन्होंने कई क्लिनिक्स को दे दिया. फिर एक दिन को पता लगा कि न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस ये लोग जो है ये उनका प्रोडक्ट ढंग से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इनको अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट भी चाहिए, क्योंकि इनको कैलेंडरिंग भी चाहिए. उन्होंने उनके लिए प्रोडक्ट बनाया एंड दैट फ्लू. एंड so now where was this pivot? This pivot was basically happening because there were multiple stakeholders they were talking to, and they were realizing that, okay, what they're building probably is not meant for this, probably for somebody else. There is no right or the wrong way for pivoting. But I think when you are in the discovery phase of your PMF, you should be micro pivoting almost every day. कभी कभी प्रोडक्ट पर, कभी कभी उसकी पोजिशनिंग, और कभी कभी उसकी मार्केट, और कभी कभी कौन कस्टमर है. दैट इज ऑल्सो पिवटिंग. आपने कोम बनाया, बाल कोम करने के काम आ सकता है, पर पता करते रहो अगर कोई खुजली करने के लिए यूज कर रहा है. एंड इफ यू कैन फाइंड एनफ पीपल हु जस्ट वांट टू स्क्रैच दैट itch, why not? Maybe you can call it the itch scratcher. If it works, it works. Maybe you figure out that some people are asking you to make a eco-friendly wooden comb. Maybe this is technically not a pivot from the comb, but it is a pivot in the audience. Maybe you are now serving to eco-friendly audience, and so on. So pivots can be of multiple types. In POSIS's journey, we have done, I think, various pivots, 6, 7, 8 pivots. We continue to remain a restaurant management software, but we pivoted in our ideal customer. We used to serve small restaurants. Product was priced a certain way. It was sold a certain way. It was delivered a certain way. We then sold to mid-market customers, small chains. Pricing changed, position changed. Then we started selling to large enterprise customers. Then in between, we also started selling to global markets. Again, something changed. Positioning changed. Our conversation changed. Then we built more products for multiple stakeholders. Then we put them together. There is micro pivoting happening almost all the time. And the pursuit continuously is, where is the PMF? Wherever I find a customer taking our demo, or wherever we find a difficulty in landing a demo while standing in front of a seemingly ideal customer, I question, are we at the right spot? Are we looking right? Is it PMF? Does it require repositioning? Does it require rethinking? And that has made all the difference.